तो नंबर वन मिथ एंड मेंटेनेंस टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर DSGs। इस गाड़ी में DSG है, DCT, टॉर्क कन्वर्टर, AMT कुछ भी हो। एट ट्रैफिक सिग्नल देयर इज़ नो नीड टू शिफ्ट टू न्यूट्रल। आप लोग को मैनुअल वाली आदत लगी है, आई नो, न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींचना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑटोमेटिक। अपना जो ब्रेक्स है उसको पूरा डिप्रेस्ड रखो, वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल। जब सिग्नल ग्रीन हो जाए आप लिफ्ट ऑफ करो अपने ब्रेक पेडल को एंड द कार विल स्टार्ट क्रीपिंग। दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। किस केस में आपको न्यूट्रल में डालना है? इफ द ट्रैफिक लाइट इज वेरी लॉन्ग, कि अगर 3-4 मिनट लंबी ट्रैफिक लाइट है एंड इफ यू वांट टू रेस्ट योर फीट, गियर बॉक्स के लिए नहीं, आपके पैर को अगर रेस्ट करना है, देन यू कैन पुट द कार इन न्यूट्रल, एंगेज हैंड ब्रेक। अभी इस गाड़ी में D1 लगा हुआ है, ऑटो होल्ड है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं होता है अगर आप प्रॉपरली ब्रेक्स दबा के रखोगे। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ जो बहुत ज्यादा रिसर्कुलेटेड है कि भाई न्यूट्रल में कर दो, न्यूट्रल में कर दो। नहीं, न्यूट्रल में डालने से बार बार वो मूवमेंट से एक शिफ्ट शॉक लगता है ट्रांसमिशन को। दिस इज अ न्यू कार, इसमें वो फील नहीं होता, बट आई विल शो यू एक ओल्ड कार में कि व्हेन यू एक्चुअली पुट इट इनटू ड्राइव, द कार शेक्स अ लिटिल बिट। सो दैट कम्स विद अ gradual wear and tear, which you can prevent by not doing a lot of this neutral to drive movement. Second thing is DSG, dual clutch transmission, dual clutch automatic, कोई भी हो, it does not like traffic. It does not like that creeping movement जहाँ पे you are trying to close in the gap and आप अपना spot छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपने dual clutch गाड़ी ली है, so you have to change your psychology a little bit. You have to be a little bit relaxed. The first thing, when you press your brakes, press them completely so that your car stops. आपको RPM पे दिखेगा कि revs have come down to around 800 RPM, gear has been completely disengaged. फिर जब ट्रैफिक आपके आगे मूव करना होता है, one method is कि आप उस गैप को बहुत जल्दी क्लोज करना चाहते हो, you lift off from your brakes, हल्का सा गियर एंगेज होता है, रेव्स ऊपर जाते हैं, then again you brake. Please don't do that. That puts a lot of pressure on the clutches. Wear and tear ज़्यादा होता है, हीट बढ़ती है. What to actually do in such situation is कि आप एक या दो कार का गैप हो जाने दो, then you lift off, let the gear properly engage, let the car crawl, थोड़ा सा अगर आपको throttle देके कवर करना है, do that, and then you stop again fully. Give the gearbox time to fully engage the gear so that there is no slippage. Similar चीज़ manuals में भी होती है, where you ride the clutch, half clutch पे you crawl. Again, that is not good for the life of the clutch. पूरा disengagement, पूरा engagement, so that our car knows what it is doing. We are not confusing it. This is how you have to deal with this gearbox in traffic. I know it will not be hard. If you are someone who likes to not give space to other cars to cut in front of you, ऐसा बहुत बार होगा कि गाड़ियाँ आगे आ जाएंगी. People will honk कि बढ़ा क्यों नहीं रहा है वगैरह. That happens to me a lot. कहाँ पे होता है मैं आपको बता दूँ, बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. I think ORR in Bangalore, Western Express Highway, कोई भी टोल होगा, you have to have that in your mind कि I'll let some space develop in front of me, फिर मैं brakes छोड़ूंगा, मेरी कार आगे बढ़ेगी, then I'll again fully depress the brakes. So the third commandment or the way is to make the life of our TCU more predictable, more easy. So जब आप accelerate कर रहे हो, keep your foot steady, मतलब make it predictable for the TCU to upshift the gears. अगर आप light रखोगे foot accelerator पे, the gear shifts will happen very fast. If you will fully depress the accelerator, the car will hold the revs a little longer and the shifts will take place at a higher RPM. What I suggest is you take a sort of a prospective view when you are driving, कि when I can drive smoothly, where I have to stop, so that you can make your acceleration and braking much more smoother. Basically, sudden acceleration, sudden brake will confuse the TCU कि what should be the next gear. So you'll see अभी what I'll do is accelerate very gradually and you see where it is shifting the gears. So इस कार का peak torque band is 1500 to 4100 RPM. 40 पे fourth, T5. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है
तो I prefer not driving a DSG or dual clutch car, especially the DSG ones. The transmission sump is really low. तो जो भी आपका कार का ground clearance है 180 mm if you have a Virtus or a Slavia, maybe 190 mm for a Taygun or a Kushaq, that sump may you can add 10 more millimeters and that becomes your water weighting capacity. Although जो transmission box है in and itself that is sealed very nicely compared to 1.2 TSI. Even the screws go in very deep, तो water ingress के chances बहुत ही कम है. But this is more of a precautionary thing which I like to do, because even though water weighting 200 mm मान लेते हैं, still we don't know कि अगर जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उसके अंदर कोई अगर पत्थर है and that hits your transmission box, then it is game over. So if it is raining very heavily and there is water logging, I prefer to not take a car with DSG or a dual clutch transmission out that particular day. If your gearbox is acting jerky, especially first to second, second to third, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में क्रॉल कर रहे हो, these gears can get jerky. वही जो मैंने आपको बताया initially कि if your driving is not predictable, there is a lot of acceleration, sudden braking, DSG will lose its mind. उसके दिमाग की हट सकती है. अगर ऐसा हुआ है then what you do is you reset the DSG. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ कि कैसे आपको DSG को रीसेट करना है. It will forget all your driving memory जो भी उसने स्टोर करके रखी है and it will be as good as new. इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि the way you drive is actually stored in its memory, in its recent memory. आप समझ सकते हो. It is like a RAM which is not purged till you change your driving style. If you have driven very aggressively, so it has stored in its recent memory that you have been driving like that and you will continue to drive like that. So it will not give you those early shifts. So अगर driver change हुआ है, so the new driver will also feel कि the car is acting a little bit too aggressive. अगर आपने बहुत ही relaxed तरीके से चलाया है, and if the driver changes, he will feel that why is the car feeling so lethargic. That is also easily changeable. You drive in your own style for a few minutes and the car will adapt to your driving style. Ultimately, the final thing which I can tell you is, after telling all those tips, is to not think too much about the DSG and its maintenance. Yes, इतनी सारी टिप्स बताने के बाद मैं आपको फाइनली ये बोल रहा हूँ कि just enjoy your car the way you want it to enjoy. Don't get too flustered about what to do and what not to do. So what will happen is, if you will treat it like a very small baby, बहुत आप इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, you will not enjoy the car for what you have spent your money for. Enjoying the car is more important. So my final advice is, don't take too much pressure about this gearbox and its maintenance. Clutches are a normal wear and tear part. They will wear down in 7 to 8 years or near 80,000 to 1 lakh kilometers depending on your usage. That is perfectly normal. What you can do is 1 to 1.5 lakh आप budget in कर सकते हो already when you are buying it. That is the first thing. Second thing is, you can get yourself an extended warranty. Extended warranty period तक just use the car, अच्छे से use करो दिल खोल के. Sell the car within the last year of extended warranty if you are not feeling confident कि उसके बाद आप उसको maintain कर पाओगे.